Come now. Wait, I was going live. Just let Why are you first in the room? Great. You take this one. A lovely afternoon to one and all present on this virtual platform. Expressing gratitude is the greatest form of virtue. I would like to express my gratitude to the management and principal of Achievers College, Miss and the principal of Achievers College, Miss Sophia D'Souza, and not forgetting Professor Siddhi Chauhan, who inspired me to accept this invite. Not forgetting to express my gratitude even to the well accomplished organizing team for all their efforts. Thank you is the least I can say to God and to you all to show my appreciation and gratitude for giving me this virtual platform. I also express my gratitude to all the lovely audience present on this virtual platform this afternoon. God bless one and all. I've been to this college and was highly impressed with the management of this college. And I realized that success is a result of hard work, dedication, and smart work. These are the credentials of the management of Achievers College. Very soon, this college will reach its heights as it is blessed with a good principal, good teachers, good students, and good staff working in unity. God bless one and all. Let's remember God and we will say a short prayer and then start. We have to thank God for this wonderful day, the day which we will never forget. Yes, God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Count your blessing, count them one by one, and you will be surprised to see what God has done. We have to thank God that He has saved us from coronavirus and He has protected us and He has shown this day today. I ask God to bless all the audience, all the participants, and everyone who's present on this virtual platform today. When God made a world, He made woman last. But since then, He has not rested in peace. A woman can make the world a peaceful place to live in. It's very important for a woman to develop herself. It is a need of the hour, and because all of us are not lucky, some are fatal. So we have to be prepared for the worst. Like COVID-19 is preparing us for the worst days to come. A presentation on self-development of women, a need for an hour, a village girl story. That is a small girl who was working as a servant in somebody's house. This girl used to always be tortured by the madam, and she used to keep on saying things to her. And this girl used to go home and cry every night. She wouldn't show her parents. But then one day, this girl saw a balloon man. She saw the balloon man selling balloons. Okay, and she saw there were different color balloons, and this man, like, sometimes what he used to do, he used to fill in gas in the balloon and he used to leave it,
and then there's to be a crowd coming to buy all the balloons. So this girl was wondering, all type of colors are there, but there is no black balloon. So she went to that man and she asked him. She said, is it that poor people don't come up in life because we are black? He said, what is the meaning of that? She said, no, we don't have money, we don't have education, so we are termed as black, and that is why maybe we don't come up, and I cannot see any black balloon going up. So this man said, no, my child, it is not like that. It is that what you put in that balloon which makes it go up. Even in this black balloon, if I fill in the gas, it will go up. She said, what do you mean by this, uncle? He said, see, my child, if you want to come up in life, then you have to work hard. You have to educate yourself. You have to work hard. And then 100% you are also going to grow and you will become something in life. So this girl from then onwards decided that she is going to develop herself. She decided that, yes, I am going to study. And she went and found out where there is night education. And she used to work in the day, help her parents. Night, she used to go to the night school. And she started working hard. She developed a personality. And one day she became a doctor and everyone was shocked by it. So this is a story of a small village girl. When she can do it, yes, also we can do it. To empower yourself, you have to develop yourself and your personality. You have to believe in yourself and God. Together we can do wonders. Without God, we cannot do anything. You do your best and God will do the rest. You can be the best. You can be the best. You can be the greatest queen standing on your chest. You can ask of God by knocking on his door. You can be a master. Don't wait for luck to show. Dedicate yourself and you will find yourself, because you burn with the brightest flame and the world gonna know your name. Yes, you can, you must, and you will. You have to earn your own name and fame if you believe in yourself and in God. The most important thing is, if you want to really grow up in life, if you want to empower yourself, you have to believe in yourself. You have to believe in your abilities. You have to believe in your capabilities, that you can achieve your dream. Do not limit yourself. Take control of your feelings. Take control of every circumstances, good or bad circumstances. Don't get discouraged. Work on yourself daily. Your story is far from done. The best is yet to come. To achieve, you must believe that you can fulfill all your dreams. You have the power in you, and it's all in you and you only. Persevere. Yes, all you have to believe that you will achieve it. Your pain is there. There are pains, but then the pains will make you great. You have to say, I will take a chance to be who I want to be. I am going to reach the sky way up high, step by step. I will make my own way. If no one believes in me, I will do it brick by brick. I will build my destiny. Take control of your life. Life should not control you. The joy inside will start rising up once you start becoming successful. आपके ऊपर भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, दूसरों पे भरोसा रखोगे तो आप कमजोर बन जाओगे. कमजोर कभी नहीं बनना है. आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे? अचीवर्स. अचीवर्स, A for active, C for confident, H for honesty, I for interest, E for ethics, V for vigor, E for enthusiasm, R for responsibility. And that's why achievers always succeed in life. Now, there are two types of achievers. A high achiever is someone who is successful in his studies or work and because of the results of his hard work. And a low achiever is someone who achieves less than the others. Real achievers seldom stay in their comfort zone. They push themselves. They do something unthinkable and unimaginable. There is Zamir Dale. This man, he was a blind and deaf person, but this person behaved exactly like a normal person and turned out to be a very, very, very successful person. So you have to read success stories. You have to read stories of achievers, and then you have to motivate yourself. Like my son, he's always reading success stories of football player because he wants to become a football player. Be the artist of your own life. Please don't give the paintbrush to anybody else. We grow up only when we face challenges, and that is more admired than the growth you achieve easily without obstacles and challenges.
Yes, the first step is education. Education and a good job is a must for empowerment. The more young people grow into well educated adults with fewer dependents and new opportunities to acquire wealth, saving, and purchasing power, the more they will be able to accelerate economic growth and development. So, we have to be educated and we have to have a job. Now, empowerment through self development. What is the meaning of self? Self, strong efforts for a lovely future. Yes, what is the meaning of self? Strong efforts for a lovely future. When I was small, I always had a dream that I am going to become a professor. And my parents were both illiterate. Nobody was there to guide me. But on my own, I went and found out from people what you have to do, what you have to study here, and what is required to become a professor. And today I have fulfilled my dream. Self means knowing both your good and bad qualities, your emotions, your thought, your spiritual growth, your knowledge, sentiment, mental and physical developments. Development means growth plus change. Whatever growth has taken place, that change. For example, a child in the womb of the mother, 2 महीना हो जाता है, then the child is formed, half formed, then slowly the hands are come up, then the legs are formed, and the child is complete. After 9 months, once the child is totally grown and developed, it comes out. So development means growth plus change. Self-development means growth plus change for the better in your qualities and other areas of your life: emotional, spiritual, mental, physical, social, even your health and your personality. God has blessed each and every one with some talents or the other. We have to use these talents. हमें find out करना है कि God ने हमें क्या talents दिया है, and we have to use those talents and we have to learn new skills. It is for us to know what talents we have. Success is a continuous journey, not a destination. Remember, success is a continuous journey, not a destination which we never arrive. Once you succeed in one, you want one more. Once you succeed in another, you want to go ahead. For example, you have bought 1 room kitchen, you want to buy 2 room kitchen, from 2 room kitchen to 3 room kitchen, then you want to have a small bungalow. Yes, this is what is success. It's a continuous journey. It is never an end. Please don't fight for equality. No, never fight for equality. You work at it. And how do you work at it? By getting a good education, by getting good job. Good education and good job will empower you. Then automatically you will get your equality. But you have to work for it right from the beginning, which I will teach you as we go ahead. Okay, there will be days when you feel like giving up, but don't give up. There will be days when you feel like you just don't have what it takes, but you do. There will be days when everything seems to be falling apart, but it won't. You must know things will work out for the good. And there will be days when you look back and say, I am glad I never gave up. Yes, never give up, come what may. कभी भी हार नहीं मारना, कभी भी हार नहीं मानना, और कभी भी ऐसे गिव अप नहीं करना. It's very important for self development. Yes, once what happened, I was watching a small ant. एक मूंगी वहां पे चल रही थी और एक पत्ता लेके चल रही थी, और मूंगी पत्ता लेके धीरे धीरे जा रही थी. फिर वो बीच में एक क्रैक आ गया. क्रैक मतलब एक क्रैक आ गया, चीर था. अभी मुझे लगा अभी मूंगी क्या करेगी. मूंगी ने क्या किया, पत्ता को वो क्रैक के ऊपर रखा और फिर वो पत्ते के ऊपर चल के वो साइड गई, फिर से पत्ता लिया और फिर से वो चलने लगी. और ऐसे वो पत्ता लिए 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 फिर वो अपने होल के पास गई. होल के पास जहां पे वो गई, उसने देखा कि वो पत्ता अंदर नहीं जा सकता है, तो उसने पत्ता वहीं पे बाहर छोड़ के वो अंदर गई. मैंने सोचा, माय गॉड, इतने छोटे मूंगी को गॉड ने इतना अच्छा दिमाग दिया है, तो हमको भी दिमाग दिया, हम क्यों नहीं यूज करते. जब मूंगी दिमाग यूज कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते. और मूंगी ने वो पत्ता वहां पे ही छोड़ के गई, इतना मेहनत लेने के बाद. इसका मतलब हम लोग जो भी करते हैं, वी वर्क सो हार्ड
हम लोग ये करते वो करते, लेकिन लास्ट में जब हम ऊपर जाते हैं तो खाली हाथ जाना पड़ता है. It doesn't mean that you shouldn't work hard, but you should remember all these material things, they remain here only. What goes up with you, people remember you for for two things, either for your good things or your bad things. Always do good things so that later on, when even if you're not there, people always remember that and talk only about your good things. Yes, you have to say, I am capable of anything. I decide how I feel no matter what the circumstances are. I have so much to be grateful to God. And every time you have to say, thank you, God, you gave me eyes. Thank you, God, you gave me hands. Thank you, God, you gave me legs. Thank you, God, you have given me whatever God has given you. Just say thank you. Being myself attracts the right people. I don't want to copy others. No, let them talk the way they want. Let them behave the way they want. I know I will look in the mirror and ask the mirror, mirror on the wall, is this right or wrong? And then you will go accordingly. Kindness always wins. Yes. Sorry, excuse me. Yeah. Kindness always wins. I have so much to offer. God has blessed me and I've got so much to offer others. My best is yet to come. This will empower you and attract better circumstances in your life, and you will see magic. Yes, you will see magic in your life. What does it mean to be equal? By equal, I mean have your own identity, have your own status. हम लोग अपने डैडी मम्मी से, हम लोग डैडी से सिर्फ सरनेम लेते हैं. शादी के बाद हम लोग हस्बैंड से सरनेम लेते हैं. बस उतना ही. बाकी का हमारा खुद का होना चाहिए. हमारा खुद का नाम, हमारा खुद का शोहरत, name, fame, everything should be ours. You should make your own house. You should have your own identity. You should have your own bank balance. Yes, then you can say, yes, I'm equal. Equal does not mean going and fighting. No, that's wrong. I don't believe in that equality. Yes. So you have to get educated and you have to empower yourself. Now, what do I mean by empower? Empower means that E for education. Yes, you have to empower yourself. Become dynamic. E is for education. D is for dynamic. U is for upfront. बिंदास, जो सच है वो बोलने के लिए हिम्मत करो. Concentrate. C is for concentrate. S is for assertive. T is for time oriented. E is for ethics. And D is for determined. Yes, these are the qualities of empower. If you want to empower yourself, you need to have all these things. Education is a milestone of women's empowerment because it enables them to respond to challenges, to confront their traditional role and change their life. Education gives you the power to change your life. Education helps a woman to understand her rights, to equal treatment like a man in the society of this nation. It doesn't have expiry date. एजुकेशन का कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है और कभी एम्प्टी नहीं होता है. सो प्लीज मेक एजुकेशन योर बेस्ट फ्रेंड, योर स्ट्रॉन्ग हथियार. एजुकेशन को अपना हथियार बनाओ, आपका बेस्ट फ्रेंड बनाओ. वो एक बहुत ऑनेस्ट और लॉयल फ्रेंड है, वो कभी आपको नहीं धोखा देगा. बाकी के फ्रेंड्स आपको धोखा देंगे, लेकिन आपका एजुकेशन आपको कभी भी धोखा नहीं देगा. वुमेन एम्पावर्ड मीन्स मदर इंडिया एम्पावर्ड. ये किसने कहा है? Jawaharlal Nehru ne. Women empowered means Mother India empowered. Yes, we have to get empowered. Educated girls, they have a unique positive force. Girls who are educated, they are very good in taking care of their family, very good in taking care of the children's education, very good in savings. They know how to take care of the health. Yes, now all these coronavirus, अभी educated लोगों को बोलना नहीं पड़ता है, मास्क पहनो. You have coronavirus attacks you to your eyes, nose, mouth. So चश्मा पहनो और मास्क, नाक और मुंह कवर करो और बाहर से आने के बाद हाथ धोना. ये एजुकेटेड लोगों को बोलना ही नहीं पड़ता है. बट उनको वैक्सीन दे दो, वो वैक्सीन उनके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा. उनको न्यूट्रिशियस खाना दे दो, क्या क्या खाने में देना है. अगर एक लड़की एजुकेटेड है, ये माँ एजुकेटेड है, एक बेटी एजुकेटेड है, तो ये घर कोरोना से बच सकता है. She knows how to take precaution. Thus, education is important for self-development. It's very important. Now we all have to climb the ladder of success. Yes, we have to climb the ladder of success. What do I mean by ladder?
Ladder means L for lead, A for attitude, D for dedicated, D for determined, E for educated, R for responsible. अभी responsible के ऊपर I have something to tell you. There was a man, he was a boss of a company. When he was retiring, when this man was retiring, yes, when this man was retiring, sorry, I just switched on the cooler. When this man was retiring, he gave a note to the next boss, and he gave one envelope he gave, and in the envelope he gave two notes, and he said, "This is number one, and this is number two." He said, "Whenever you come face crisis, you open number one." Okay, so when the next boss, when he faced crisis, he opened the first note in which it was written number one. What he read? What did he read? Blame the ex-boss. Okay, fine. After a few years, again he met with crisis. Then he opened the second note. What was the second note saying? The second note said, please make an envelope with two notes like this and give it to the next boss. Matlab, people who don't want to take responsibility, they never learn. They just ignore their mistakes. They deny their mistakes. Accept your mistakes and learn from your mistakes. Ladder is a symbol of prosperity. Always dream, ख्वाब देखना रात को, सुबह में, दिन में कि आप ये प्रॉस्पेरिटी का सीढ़ी चढ़ रहे, ओके, और प्रॉस्पेरिटी का सीढ़ी चढ़ते वक्त उसके जो स्टेप्स है ना, उसकी सीढ़ियां तोड़ना मत, दूसरों के लिए भी रखो, क्योंकि पीछे और भी लोग हैं जिनको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है. Hope is a wish. Faith, believe it will happen. But what is courage? Courage is that you are going to make your dreams come true. Yes. And what is dream? D for desire, R for responsibility, E for education, A for attitude. What kind of attitude? Positive attitude. And M is for motivation. You have to keep motivating yourself. कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है. आप घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा को खुद पानी पीना है. आप घोड़े का पानी आप नहीं पी सकते, घोड़े को खुद पानी पीना है. सो मोटिवेशन हैज टू कम फ्रॉम यू. एंड ऑलवेज सी पीपल हु आर एक्सेलेंट, जो पीपल एक्सेल करते हैं ना, दे हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, पर्सनालिटी. ये जो लोग हैं ना, उनको आप देख के ही बोल सकते हैं, अरे ये सक्सेसफुल है. उसकी चाल, उसकी जिस तरह से रहता है, उठना बैठना, उनको देख के आप बोलेंगे ये सक्सेसफुल इंसान है. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. ट्राई एंड ट्राई until you succeed. Never give up. Be like the ant. Always remember the ant. Ants कभी give up नहीं करते. इतनी छोटे रहते हैं, लेकिन तो भी they never give up. What do I mean by self-development of the girl child? Self-development is taking steps to better yourself, such as by learning new skills, developing your talents, and overcoming your bad habits. सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपके बैड हैबिट्स सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं. वो बैड हैबिट्स को आपको फेंकना है. Okay, you have to throw your bad habits. You have to get educated. All this will help you in self-development. Always work at becoming an achiever. Now we are in achievers club, and always work at becoming an achiever. Never depend on luck. Yes, never depend on luck. और जैसे अच्छे गॉड करेगा, नो. एक आदमी था, उसके गांव में बाढ़ आया था, फ्लड, एंड सब लोग भाग रहे थे. अभी बाढ़ आया ऐसे करके सब लोग भाग रहे थे, लेकिन ये आदमी नहीं भागा. सब लोग उसके पास आए, बोले कि अरे यू हैव टू दिस, व्हाट इज दैट, यू हैव टू रन अवे फ्रॉम हियर. इसे नहीं, मेरा गॉड है ना, वो मुझे बचाएगा. फिर बाद में एक बड़ी बोट आई, बोट ने सबको लेके गया. बोट वाले ने उसको बोला, अरे चलो, यू प्लीज कम, लेकिन ये आदमी गया ही नहीं. फिर बाद में एक छोटा बोट सिर्फ उसके लिए आया और वो गया उसके पास, बोला प्लीज ये लास्ट है, उसके बाद कोई बोट नहीं आने वाली है. बट नहीं, ये आदमी नहीं सुना. लास्ट में ये आदमी डूब गया और मर गया. डूबने के बाद उसने गॉड को पूछा कि व्हाई डिड यू नॉट हेल्प मी. मैं तो आपको इतना प्यार करता था, लेकिन आपने मुझे क्यों मदद नहीं किया. तो गॉड ने बोला, वो 3 बार जब आपको मदद करने के लिए आए थे, वो मैं ही था.
लेकिन नहीं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और आपने बस ऐसी अंधविश्वास है, नहीं मेरे पास गॉड है, मेरा लक अच्छा है, नहीं ऐसे नहीं बोलते. सो वी हैव टू बी अचीवर्स. अचीवर सेज लेट्स फाइंड आउट, बट अ लूजर सेज nobody नो, किसी को पता नहीं चलेगा. एन अचीवर सेज आई एम रॉन्ग व्हेन ही मेक्स अ मिस्टेक, बट अ लूजर सेज अरे मेरी गलती नहीं है, इट वाजंट माय फॉल्ट. एन अचीवर से goes through a problem, he goes through all the pains and he'll be successful. But a loser never gives past it. He will say जाने दो ना, ये क्या है. An achiever is committed. A loser never makes promises. Always say I'm good, I have to do better. But what will a loser say? I am not worse than the other people. मैं उनसे तो बुरा नहीं हूं ना, ऐसे बोलेंगे. वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं मुझे और अच्छा बनना है, लेकिन मैं उनसे तो बुरा नहीं है ना, मेरे को 50% मिला, कितने लोगों को 35 मिला, 40 मिला, वो ऐसे बोलेगा. लर्न An achiever learns from his superiors, but a loser will always put his all superiors down. And the achievers are different. Achievers have an altogether different way. Now you have to empower yourself through self development. क्या चाहिए? यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर. व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? आप अपने आप को अच्छे से पहचानना. अगर आप अपने आप को नहीं अच्छे से पहचानते तो क्या फायदा है? शायद अचीवर्स कॉलेज में ही जब मैं आई थी तो हर सीढ़ी में शायद मैंने एक मिरर देखा था, और मैं इतनी खुश हो गई. मैं मेरे कॉलेज में जाके बोली कि हर सीढ़ी में ना, शायद आपके कॉलेज में जब मैं आई थी एफिलिएशन के लिए. सो व्हेन आई कम टू अचीवर्स कॉलेज, आई थिंक आई सॉ इट इन अचीवर्स कॉलेज ओनली, बट व्हेन आई वेंट टू आवर कॉलेज एंड आई टोल्ड माय प्रिंसिपल, आई सेड प्लीज, आई सेड पुट अ मिरर ऑन एवरी फ्लोर, तो ताकि स्टूडेंट्स जब एक सीढ़ी चढ़ेंगे आईने में देखेंगे, अपना बाल ऐसे ऐसे करेंगे, फिर बोलेंगे ऐसे करेंगे, ठीक ठाक बोलेंगे, अरे मैं पढ़ा लिखा दिखता हूँ क्या, मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट लगता हूँ, या मैं एक गुंडा मवाली दिखता हूँ. फिर अगर उसको लगता है अरे जो मैंने इसमें गले में पहना, हाथ में पहना, उससे मैं गुंडा मवाली दिखता हूँ, तो वो सब निकाल देगा. So these mirror is important. You should have mirrors everywhere in your house, because every time you look in the mirror, your mirror will tell you that you have to improve in this, you have to improve in this, and for that you have to be self aware. You have to introspect. अपने अपना अंदर झांक के देखो कि आप में क्या अच्छे गुण है, क्या बुरे गुण है, और जो बुरे गुण है आप निकाल दो. आपको अचीवर बनना है तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल योर बैड हैबिट्स, और आपके गुड हैबिट्स को पकड़ के, उन आपके स्ट्रेंथ्स को पकड़ के आपको ऊपर आना है. देन यू हैव टू हैव सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ करेज, सेल्फ फॉरगिवनेस. Forgive others. Always pray to God, forgive me for whatever sins I have done, as I will also forgive others. ये नहीं कि आपकी गलतियों की माफी मांगो, लेकिन आप भी दूसरों को माफी करने के लिए तैयार होना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट वी नीड टू इम्प्रूव both our skills, soft skills, hard skills, personality. We have to improve all these three: soft skills, hard skills, and a personality. What is soft skill? Supportive opportunities for a fabulous few time. Supportive opportunities for a fabulous time. S for supportive, O for opportunities, F for fabulous, and T for time. Okay, I will tell you what are soft skills. Soft skills, you have to improve your communication skill, you have to amplify your behavior. What is behavior? Self control, self esteem, self confidence, your sense of humor, smile. All these things you have to improve. Then you have to enhance your skills. What are skills? Learning skills, talking skills, sitting skills, your positive attitude, leadership skill, taking responsibility, focus, time management, emotional control. Okay, all these are your skills which you have to enhance. Then you have to improve your body language. Then you have to you have to learn how to solve conflicts. All these things are soft skills. Now, what are hard skills? Handy, authentic, reliable discovery. H for handy, A for authentic, R for reliable,
D for discovery. What is that? What is it? Hard skills. Hard skills are the languages you learn, the mechanical studies you do, computer knowledge you do. What are these? These are hard. बहुत hard. Soft skills, बहुत soft. तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए पर्सनालिटी को डेवलप करना है, आपके हार्ड स्किल्स को भी डेवलप करना है और आपके सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करना है. लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू हैव टू improve your soft skill. What is the first soft skill? The first soft skill I talked about is how to improve your communication. How you will be able to improve your communication. You can improve your communication. First is by public speaking. Like take part, go on the stage, शर्माना मत. Go on the stage, शायद ड्रामा के लिए, गाना गाने के लिए या स्पीच देने के लिए कुछ ना कुछ चीजों में आप पार्ट ले लो. यस, आप पार्ट ले लो और आपके अंदर जो डर मतलब शैतान, डेविल, उसको निकाल के फेंक दो. शाइनेस, शर्माते हैं नहीं, कोई नहीं शर्माता है. शर्माना मतलब आपने एक कवच बना के रखा है, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं. आप ये शाइनेस के आड़ में, ये मीन्स कवच में आपका वो जो डर है ना वो छुपा रहे. आप बोल रहे आई एम शाई. नो, यू आर नॉट शाई, यू आर अफ्रेड. सो रिमूव दैट फियर. Yes, you have to remove. Watch inspiring videos and movies. कितने अच्छे videos आ रहे. You can watch on YouTube. Use your data for that. Watch good videos, good movies. Use your body language while speaking. Your hand. Suppose I want to say big. I want to say small. Okay, all these are very important. Be a very good listener. If you listen well, you can pick up English. Yes, you can learn English by listening, by talking, by reading, and by practicing. On whom you'll practice? You have to practice on people who don't know you. अगर जो लोग आपको नहीं पहचानते, बस स्टॉप पे, ट्रेन में, क्यू में, कहाँ जो लोग नहीं पहचाने, नहीं तो आप क्या करो, आपका मोबाइल ले लो, ऑन मत करो, मोबाइल को आपका स्टूडेंट बना के आप फटाफट यू स्टार्ट टॉकिंग टू इन इंग्लिश. यस, एंड देन से वाओ, टुडे यू हैव स्पोकन इन इंग्लिश. एंड एवरी टाइम यू यूज न्यू वर्ड्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको इम्प्रूव करना है तो आपको प्रैक्टिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके, हम लोग 24 आवर्स है, 24 घंटे, उसमें से अगर 1 घंटा इंग्लिश में बात करेंगे और 23 घंटा हिंदी में बात करेंगे तो ये रेस में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली 23. तो आप दिन रात इंग्लिश में दिमाग में बात करो. आप मोबाइल में को ऑन मत करो, दीवार से बात करो. आप ऐसी बात करते रहो मन में. सो इट विल बी अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. डोंट फील बैड इफ यू मेक अ मिस्टेक. कभी आपने गलती किया और कोई हंसने दो. आपको क्या करने का है? कोई हंसा तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन आप, एक्सक्यूज मी, okay, don't feel bad if you make mistake because everybody makes mistake. आप गलती करोगे तब सुधरोगे. Your job very much depends not on your education. Just 20% आपके एजुकेशन के ऊपर है, बाकी का 80% डिपेंड your behavior, your control of your anger. All these things will, make you, will help you in getting a job. You have to learn to have all these soft skills. And teachers never have pride and arrogance. Always have a good attitude. Just because we have authority, we should never have pride and arrogance attitude. You know what happened once? एक ऑफिसर है ना, ड्रग के डिपार्टमेंट में से एक क्षेत्र में गया था, फार्म में गया था. तो वहां के फार्मर को बोला कि मुझे किसी ने बोला है कि आपके फार्म में इतने वो ड्रग्स है. तो वो फार्मर बोला नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता. वो बोला देखो ये मेरा बैच है, ज्यादा पटपट मत करना, मुझे सर्च करने दो. सो ही सेड अच्छा सर, अब सर्च करो, अब सब जगह पे जाओ, लेकिन वो खेती के तरफ मत जाओ. ही सेड क्यों, आप कौन है मुझे बोलने के लिए? मेरे पास कार्ड है. और उसने उस फार्मर को कार्ड दिखाया, बोला मैं जो जगह जाना चाहता हूँ मैं जाऊंगा. और वो पहला वही जगह पे गया जहाँ पे फार्मर ने उसको मना किया, और इतना बड़ा आवाज आया, हेल्प 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 हेल्प. तो वो भाग के फार्मर के पास आया. फार्मर बोला अरे
कार्ड दिखाओ किसको? वहां पे बहुत वो खतरनाक बैल थी और वो उसके पीछे लग गई, तो फार्मर ने उसको बोला अब आपका बैच दिखाओ ना उसको। तो यू शुड नेवर बी प्राउड। यस, if you want to have a good career, you have to develop your soft skills. There were two people, both of them, they went for the interview for HR, और दोनों को नौकरी मिल गई, लेकिन 1 महीने के बाद एक को प्रमोशन मिला और टॉप मैनेजर बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास सॉफ्ट स्किल्स था और दूसरे के पास टेक्निकल नॉलेज था, एजुकेशन था, सब था, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स नहीं था। उसको बात करने का तमीज नहीं था, उसको मैनर्स नहीं था, वैल्यूज नहीं था। सो बिकॉज ऑफ दैट द अदर वन बिकेम अ मैनेजर एंड ही रिमेन्ड वेयर ही इज। ओके, body language is very 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 important. Now when you do a handshake, you do like this. इसका मतलब क्या है? मतलब अरे मैं ही सब कुछ हूँ। अगर आप ऐसे करते नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, that means you're a low person. And when you do like this, ऐसे पकड़ के जोश से, then this shows that you're a very confident person, and that is the kind of handshake you should have. Body language, your body speaks. Yes, your face speaks, your body speaks. So how you sit, how you talk, how you walk, लोग आपको देखते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप अच्छे मूड में रहते हैं, so your body speaks, so you have to improve your body language. आप टेंशन में आते हैं, ऐसे से कुछ ना कुछ करते, तो सामने वाले को पता चलता है that yes, इसका थोड़ा तो कुछ मैसेजेस SMS भेजते रहता है आपका बॉडी. सो यू हैव टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज. यू हैव टू कीप आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू टॉक टू पीपल. जब आप लोगों से बात करते हैं ना, तो ये ट्रायंगल वी शेप, इधर 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 देखो, these are the V shape. You should look here, so you should keep eye contact. Then you should keep your head position, your back straight when you're walking. That's very important, how you walk. When you walk, people come to know ये confident personalities है, ये confident personalities नहीं है. अगर आप बैठे हैं तो आपके जो पैर है ना साथ में रहने चाहिए. आप पैर फसार के बैठोगे मतलब यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली. अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हैं और आप पैर फसार के खड़े हैं, दिस मीन्स यू आर नॉट coming from a good family. You have to always keep your legs together. Yes, when somebody is talking, yes, if you go on doing this, that means it's very boring. So your body language, your body speaks. So you have to improve your body language. Your voice also tells the tone of talking. For example, somebody comes to my house and they say, can I have a cup of sugar? I'll say, okay, yeah, yes, I'll give you. And I give the cup. And when the person says, thank you, I say, इसका मतलब सामने वाले को मालूम है कि वापस मत आना. And he said, no, it's okay, यार, please come again. No need of saying thank you. Then the person knows कि ये इंसान सच्ची में दिल से मुझे हेल्प कर रहा है और ये इंसान वापस, अगर मैं वापस आऊं तो भी उनको बुरा नहीं लगेगा. यस, आप एक हीरो हीरोइन को कैसे जानते हैं? हीरोइन है करके आपको पता है, बोलना ही नहीं पड़ता है, म्यूजिक चालू हो जाती है और एक अच्छी से हीरोइन ऐसे 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 करके आ जाती है, आपको पता चलता है ये हीरोइन है. ओके, फिर आपको हीरो है करके कैसे पता चलता है? वैसे ही वो बड़ा आएगा, बहुत मसल है, बहुत गुड लुकिंग, और उसका स्टाइल से यू कैन कम. और गुंडा मवाली आपको एक रुमाल और वो ऐसे ऐसे पान वगैरह खा के फिर ऐसे. सो मूवीज में दे शो यू, दे डोंट टेल यू कि ये हीरोइन है, ये हीरो है, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि ये हीरो है, ये हीरोइन है. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस, नेक्स्ट आई सेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. Personality development is extremely important. What do I mean by personality? Do I say beautiful? I was teaching in the class. Once I was teaching in the class and one beautiful girl came and she knocked at the door. All the students started looking at her. I told her, wait for 2 minutes. नहीं, सब बच्चे शोर करने लगे.
मैंने कहा हेलो मैम, यहाँ पे है मैम, पढ़ा रही है मैम, शी इज सो प्रिटी। फिर थोड़ी देर के बाद वो लड़की ने अपने जेब से पत्थर निकाल के फेंकने लगी क्लास स्टूडेंट्स के ऊपर। बच्चे बोलने लगे मिस उसको भगा दो, मिस प्लीज स्टोर हर आउट प्लीज। अच्छा, अरे शी इज सो ब्यूटीफुल। सर मिस क्या ब्यूटीफुल, शी इज नॉट ब्यूटीफुल मैम, प्लीज स्टोर आउट। 1 मिनट में उसका ब्यूटी जीरो हो गया। अभी गांधी जी के सर पे बाल ही नहीं थे, तो भी गांधी जी बहुत हैंडसम था। लता मंगेशकर, उसका वॉइस इतना स्वीट है ना, दैट पीपल फाइंड अ ब्यूटीफुल। सो व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी मतलब आप सर से लेके पैर तक, आपका सोच, आपका बिहेवियर, आपका बोलना, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सब पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट। पर्सनालिटी इंक्लूड्स ब्यूटी, बट ब्यूटी डज नॉट इंक्लूड पर्सनालिटी। जो ब्यूटीफुल है, ये ट्रू नहीं है कि उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी रहेगी। एक लड़का था मेरे कॉलेज में, वो बहुत हैंडसम था, लेकिन एक लड़की उसके साथ नहीं दिखती थी। तो मैंने सोचा ये इतना हैंडसम लड़के के साथ कोई लड़की ही नहीं है बाजू में, चलो हाँ, जाके मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करती, आई विल सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो मैंने उसको हाय आई एम कैरोलाइन करके हाथ दे दिया उसको, और जैसे उसने मुंह खोल दिया, इतनी गंदी स्मेल आ गई उसके मुंह से ना, कि मैंने सोचा यही कारण है कि कोई उसके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट पर्सनालिटी, आई मीन everything, right from the way you sit, stand, talk, walk, dress up, your personal cleanliness, everything is there in personality. Yes, now personality depends on two things. One is hereditary. हेरिडिटरी मतलब नाक, लिप्स, योर प्रोफाइल, आपके बाल, आपका कलर, आपकी स्किन का टेक्सचर, ये सब अपने मम्मी डैडी से आता है। लेकिन अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने इतना प्रगति किया है कि ये भी चीजों में सुधार लाते हैं। जैसे कि हर वो ये सुशांत सिंह का एक गाना है ना, चार कदम, आई थिंक द हीरोइन वाज अनुष्का, उसने अपना प्लास्टिक सर्जरी किया है, फिर श्रीदेवी ने किया है। तो नाउ बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीपल ब्रिंग चेंजेस इन देयर पर्सनालिटी। पहले क्या था, जो हेरिडिटरी मम्मी डैडी का था वही आता था। अभी ऐसे नहीं है। जब मम्मी डैडी टिंगू रहते हैं ना, तो जब उनका बच्चा पैदा होता है, उन लोग को मालूम है कि हम लोग टिंगू है, तो वो लोग साइकिलिंग पे भेजेंगे, स्विमिंग पे भेजेंगे, बादाम देंगे, पिस्ता देंगे, ये देंगे, और बच्चा इतना लंबा हो जाता है कि मम्मी डैडी को हार देता है। सो नाउ मेनी थिंग्स ऑफ हेरिडिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सेकेंड फैक्टर ऑन विच पर्सनैलिटी डिपेंड्स इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब माहौल। अभी माहौल का मतलब क्या है? योर सोशल डेवलपमेंट, योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, योर फ्रेंड सर्कल, योर नेबर्स, ऑल दिस विल कम इन योर एनवायरमेंट। नाउ दिस आई टेल यू अ स्टोरी। देयर वाज अ स्मॉल बॉय, वो खेल रहा था हमारे बिल्डिंग में, और मैं कॉलेज से आ रही थी, तो वो बॉल है ना किसी के खिड़की को जाके लग गया, और वो खिड़की टूट गई। खिड़की टूट गई तो फिर बाद में वो लड़का भाग भाग के वो लेडी के पास गया, आंटी आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, माय ball hurt your window and the window pane has broken. My auntie, my mom will pay for it. I'm really very sorry. I'll go and tell my mom, and my mom will pay for it. This lady started a AK-47 of bad words. कट 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 उसके मुंह से गालियां बरसने लगी। ये लड़का पूरा सुना, बाद में थैंक यू आंटी बोल के चला गया। दूसरे दिन मुझे वो लड़का मिल गया। मैंने वो लड़के को पूछा, अरे आपने थैंक यू आंटी बोल के आप निकल गए, क्या हुआ? तो बोलते आंटी, अगर मैं वो आंटी को बैड वर्ड्स में वापस एक भी बैड वर्ड्स देता था ना, तो मेरी मम्मी मेरे घर में ऐसे पिटाई करती थी, ऐसे पिटाई कर, क्योंकि हमारे घर में बैड वर्ड्स देना मना है। हमारे घर में कोई भी बैड वर्ड्स नहीं देता है। सो दिस इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, योर फ्रेंड सर्कल, सब लोग सिगरेट पी रहे हैं और आपको सिगरेट से नफरत है, आप उनका दोस्त नहीं बन सकते हैं। सिमिलरली सब लोग दारू पीते हैं, और फिर एक जन दारू से स्मेल से भी उनको नफरत है, तो वो उनका दोस्त नहीं बन सकता। सब लोग पढ़ने में तेज है, लेकिन तुमको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है, तो वो आप वो ग्रुप में फिट हो ही नहीं सकते। सो दिस इज एनवायरमेंट। देन योर अपब्रिंगिंग, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, all these things, that's called environment. But as you grow up,
जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं, आपने अगर कुछ बुरा भी सीखा है स्कूल से या टीचर से या मम्मी डैडी से या फ्रेंड से, आपका खुद का दिमाग आप वापरोगे और आप सोचोगे आईने में देख के कि ये मेरे में बुराई है, ये मैंने गलत सीखा है, तो मुझे इसको निकालना है, एंड यू विल डेवलप योर पर्सनैलिटी. सो ऑलवेज बी इन द हैबिट ऑफ लुकिंग इन द मिरर, आस्किंग द मिरर where you have to improve. इंट्रोस्पेक्ट मतलब अंदर झांक के देखो, झांक के देखो कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपको खुद को पता चलेगा. जैसे एक जगह पे जाओ, 1 to 50 काउंट करो और शांति से बैठो और सोचो मेरे में क्या प्लस पॉइंट्स है, मेरे में क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को आपको हटाना है. यस, व्हाट आई टोल्ड यू नेक्स्ट वाज सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको आपका सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है. ओके, आपका सेल्फ एस्टीम, ये सेल्फ एस्टीम क्या है, उसको हाई रखना है. सेल्फ एस्टीम इज जो आप अपने बारे में सोचते हैं, दैट इज सेल्फ एस्टीम. एक लड़का था, छोटा लड़का, वो ऐसे ना लेके, ये इतने सारे पेन्स दिख रहे हैं ना, पेन्स, वो लेके रेलवे स्टेशन में पेन बेचने के लिए बैठता था. ओके, लेकिन लोग उसको भिखारी समझ के पैसे डालते थे और उसको बुरा लगता था, लेकिन क्या करे, कोई नहीं उसका पेन खरीदता था, सब उसको वो पैसे डाल के निकल जाते थे. एक आदमी आया और उसने उसके टोकरी में 200 रुपया डाल दिया और वो भागा ट्रेन पकड़ने. भागते भागते वो ट्रेन छोड़ के वापस ये लड़के के पास आया और वो क्या बोला, वो लड़के को ऐसे पेन निकाला और बोला, देखो आप बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन, मैंने आपको 200 रुपया दिया तो मैं बदले में ये पेन्स लेके जा रहा हूँ, थैंक यू. एंड वो लेके गया और उसने ट्रेन पकड़ा. फिर क्या हो गया, ये जो लड़का बड़ा हो गया और एक दिन वो बड़ा आदमी बन गया और वो पार्टी में वो गया था, वो पार्टी में उसने ये आदमी को देखा और वो उसको पहचाना. फिर वो ये आदमी के पास गया, ये आदमी के पास गया और उसने वो आदमी को बोला, एक्सक्यूज मी, I would like to talk to you. Well, yes, what can I do for you? He said, do you remember once when you were traveling by train, you came and you put 200 rupees in a basket of a boy who was sitting next to the railway station. And then you said that I'm a businessman, you're a businessman. So in return of this 200 rupees, I am taking these pens and going. So he said, yes, I remember. He said, I am that boy. Because of that, I have become a businessman today. He said, uncle, he said, you kept my self-esteem high. मैंने कभी अपने आप को भिखारी नहीं समझा था. जब भी मैं टोकरी लेके घर से निकलता था, I used to tell God, प्लीज मुझे बिजनेसमैन बनाओ, मेरे पेन्स बिका दो, मुझे भिखारी नहीं बनना है. लेकिन जिस दिन आपने मुझे 200 रुपीज दिया और बोला, you're a businessman, I'm a businessman, and you took my pens and you went, that motivated me, and I decided from next day I will not accept money from people simply at all. Only if they buy my pens, I will take the money. And today I have become a very rich businessman. So self-esteem is very, very, very important. Now what happens when you have a high self-esteem? जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते, बड़ा सोचते, पॉजिटिव सोचते, ओके, देन आप स्कार्स को स्टार्स में बदलते हैं, स्कार्स को स्टार्स में बदलते हैं. अभी आई वॉन्ट टू टेल यू अ लाइव एग्जाम्पल. मेरा लाइफ में पूरा डिजास्टर ही है, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ओनली डिजास्टर्स. मैंने कैंसर ऑफ द किडनी देखा, कैंसर ऑफ द ओवरी देखा, आई मेट विद एन एक्सीडेंट, मेरा सर कट गया था, आई वाज टोल्ड बाय द डॉक्टर ये कभी नहीं चलेगी. देन आई हैड ARD अटैक, आई जस्ट मिस द वेंटिलेटर. बट every time I had these things, I came out on my own. I turned my scars into stars. I said, no, I have to come out. I'll give you just one example. I was operated on June 1st for my cancer. And I was told 1 year I have to sit at home. But 19 June college was to start. All were sleeping at my home and I was in college teaching. Okay. I was in the hospital. I was supposed to be in the hospital for a month. But on the 9th, saw me crying. He said, come on,
give her a discharge. And without even changing my dressing, he packed me home. He said, after that, I went only once to him, only once for the dressing. उसके बाद मैंने सोचा नहीं मुझे कुछ नहीं होगा. I am going to be a हट्टा कट्टा person and I am not going to go to the doctor again. I told God, देखो आपने मुझे बीमार किया, मेरा ऑपरेशन हुआ अभी नहीं. And next morning on 19, like, I was in college teaching and my parents are searching me here, there and all. Then they called up in the college. Then they told she's already in the class, she's teaching. So I didn't take rest because I knew that if I was at home, I would have fallen ill. I wouldn't be sitting like this today. Maybe I would have got cancer again and I would have died. So it's like that. You have to motivate yourself. You have to charge yourself. You have to change your scars into stars. And that will happen only if you have a very high self-esteem. When you have a high self-esteem, you are secured about who you are and you have confidence in your abilities. You allow yourself to show your true feelings to others. You don't try to be artificial. Yes, you will always look in the mirror and find out what are your flaws, तुम्हारे में क्या कमियां है, and you will work on it. You will always talk positive, think positive, any circumstances, अच्छे circumstances हो या बुरे circumstances हो, आप हमेशा अच्छा सोचेंगे और अच्छा पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेंगे. And what happens when you have a low self esteem? अगर आप अपने बारे में छोटा सोचते, गलत, नीचा सोचते हैं, तो आप बड़ा भी होगे ना कहीं आपके बिहेवियर में दिखता है. जैसे कि एक आदमी, उसने वो बहुत पुअर था, गरीब था, हमेशा भीख मांग के उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया. फिर वो बाद में उसको अच्छा जॉब मिला, अच्छा नौकरी मिला और उसको एक कैबिन दिया. तो वो कैबिन में ये आदमी बैठा था और उसके डोर पे किसने टॉक टॉक नॉक नॉक किया. नॉक नॉक किया तो ये आदमी को पता नहीं लगा कि मैं क्या करूं, कैसे बिहेव करूं, ये क्या करूं, वो पजल हो गया. तो फिर उसने अपना फोन लिया. हेलो, यस, व्हाट्स द प्रॉब्लम, यस दिस, यस यू मे कम इन. फिर वो आदमी अंदर आया और उसने वो आदमी को पूछा, यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू. इसने कहा, आपने मुझे बुलाया था ना सर. बोला, क्यों? आपका फोन खराब था ना सर, इसीलिए आपने मुझे बुलाया था ना. So this is what happens when you have a low self-esteem. You have problems showing and accepting yourself. You should always have a high self-esteem. Okay, there was some problem, so it was written over there to wait. The connection problem is there. Okay, what are the steps for self-development? What are the steps? One is you have to introspect. You have to find out where are your flaws. You have to be a goal-oriented person. You have to convert your weakness into strength. You have to plan properly and you have to work at fulfilling the plan. You have to motivate, charge yourself. You have to work hard. You have to manage your time. You have to pray properly. You have to meditate. Yes, you have to be positive. You have to keep visualizing. दिन रात को अपने सपने को देखो. रात को भी जो आपको बनना है, रात को देखो, विजुलाइज करके सो जाओ. सुबह में उठो, उसको भी विजुलाइज करो. एंड ऑलवेज कीप ऑन चार्जिंग योर सेल्फ. यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ. एक आदमी था, वो पूरा कंगाल हो गया था, पूरा कंगाल, और उसके सर पे इतना कर्ज था. तो वो जाके वो गार्डन में बैठा और वो बहुत टेंशन में था. एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और वो बूढ़े आदमी ने उसको बोला, क्या हुआ बेटा, आप बहुत टेंशन में दिख रहे हैं. तो बोला, नहीं अंकल, मेरे पे बहुत कर्जा है, मैं पूरा लॉस में गया हूँ. तो वो अंकल बोला, ओके फाइन. उसने एक चेक बुक निकाला और उसको एक चेक साइन करके दे दिया और उसको बोला कि ये चेक आप ले लो और आप उसको यूज करो और देखो आपको कितने प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे. सो दिस मैन कम्स होम एंड देन ही लुक्स एट द चेक. उसमें 5 करोड़ लिखा था. तो बोला, नहीं, अच्छा नहीं है, वो अंकल तो मुझे पहचानता भी नहीं है, मैं कैसे ये यूज करूं. तो उसने उसको वो ड्रॉ में रखा और उस दिन से उसका दिमाग ऐसे चलने लगा, वो ऐसे अपने आप को चार्ज किया कि वो फिर से गरीब से अमीर हो गया. ही बिकेम रिच. एंड after some months, he went to the same garden where he knew that man comes and he said, uncle, please take this check. So he said, why didn't you use it, dear? He said, no uncle, but this check has motivated me and I want to
I have become a rich man. So suddenly, when he was talking to this man, one nurse comes and she catches that man. Then he says, "Why are you holding her?" He said, "No, I'm holding her. I'm holding him. Sorry, not her. Him, because he's a madman. He comes here and then he will give his check and he says, 'I'm a Birla, Tata,' and people believe that he's a very rich man, and they believe he's rich. And then after some time, I don't know what happened. Oh God! But that check of that man, although he was a madman, motivated this man who went bankrupt. So that is a way how you have to charge yourself. How will you empower and inspire yourself? First and most, get rid of your fear. Fear is your weak point. Get rid of your shyness. Shyness is also your weak point. Have a positive attitude. Self praise. If you do little good, say, "Caroline, you have done something very good." Don't wait for others to praise you. No, become your own best friend. Keep your mind and your body clean. Your mind, we stay in our mind. हमारा शरीर है घर के अंदर, लेकिन हम 80% दिमाग में रहते हैं. पूरा दिन सोचते 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 रहते हैं. So we have to keep our mind and our body clean. Make education your best friend. Don't allow your past. आपका past कितना भी गंदा हो, don't allow your past to come in the way of your present and your future. Control yourself. Don't become a victim of your past. लोगों को आपको victim बनाना है, लेकिन आप victim नहीं बनोगे. जिस दिन आप victim बनोगे ना, सामने वाला इतना खुश हो जाता है. Be confident, courageous, courteous, considerate, calm, and keep smiling. Always have a smile. ये smile को एक आपका ड्रेस बनाओ. किसी को नहीं पता चलना चाहिए आप खुश है कि दुखी है. बस आपका फेस को हमेशा one smile should be there. And always have a gratitude. Gratitude मतलब thank you. जो भी God ने आपको दिया है, उसको thank you बोलना बहुत जरूरी है. Believe in yourself and believe in the power of God. Yes, that's very, very, very important. Now, how do you increase your self-confidence? You have to do it yourself. One day, a lady was sitting in the garden with a kid, with a small kid. Suddenly, one eagle came and took out the kid and went right up on a cliff and kept it there. All the people, she started shouting, "Bachao, bachao, mere bachcho ko bachao." Other people said, "Kaise chadege, kaise chadege." One small beggar girl, okay, she saw that nobody is trying to make an attempt to save that child. Usne himmat karke she climbed up, okay, and she saved that child and brought that child down. The other day somebody sent on the WhatsApp, एक monkey एक lion को मार रहा है, and it was so nice. Just imagine कहाँ से उसको motivation मिल गया, कहाँ से उसको ताकत मिल गया, पता नहीं, but उसको motivation मिला, हिम्मत मिली, self confidence, और वो lion को मारने के लिए गया. अभी बोलते हैं ना lion और eagle. Lion is the king of all the animals. Eagle is the king of all the birds. अगर ये कौवा उसको टोच लेता है, pecks this what is that eagle. What the eagle does? उसको मारने नहीं जाते कौवे को. The eagle goes on flying high, 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 high. ऊपर ऊपर चढ़ते जाता है. वो कौवे के साथ लड़ाई नहीं करने जाता है. वो सोचता है ये क्या कौवे है, इसके साथ लड़ाई करके मैं क्यों अपने आप को गिरा दूं. He just goes, the eagle goes on flying high, 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 और कौवा थक के बाद में हार मान के वापस चला जाता है. So वो ईगल उसको अपनी बराबरी का नहीं मानता है. Lion is the king of the jungle. But what happens? Lion के फेस पे आप देखो एटीट्यूड है, ईगल के फेस पे एटीट्यूड है. वो एटीट्यूड आप में लाओ. वो एटीट्यूड will give you confidence. That attitude will give you motivation. Yes, you have to have high self-esteem, self-confidence, motivation, self-courage. When a cat, बिल्ली, वो आईने में देखती है, वो आपको शेरनी, she looks at herself like a lioness. वो है बिल्ली, लेकिन उसने जब अपने आप को आईने में देखती है, वो अपने आप को क्या देखती है? That is the way you have to boost yourself. Yes, you have to do it. Only you can do it. You have to believe in yourself. You have to do it. Only you can do it. Nobody else can do it. You have to motivate yourself. And what you should do? You should keep two hands. Just close your eyes. Count 1 to 50.
See two hands, one right hand, one left hand. With the right hand, God is blessing you with confidence, courage, motivation, high self-esteem, all these positive things which are required for self-development. God is blessing you. It's going into you. And with the left hand, God is taking all your fear, shyness, low esteem, all these negative things, and He's taking it far, 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 and He's throwing it so far that it doesn't go. All these negativities should never go to anybody else. Yes, you do that exercise, and you see, you will become very confident. You'll become very bold, courage, and it'll make you a victim. Again, there is some connection. Yes, there was some connection problem, so I had to stop. Okay, so if I stop, please have patience, because there it comes that there is some connection problem, so you have to wait. So then I have to wait for some time. Okay, now you know this the deer. The deer runs 90 kilometers per hour. Okay, and the tiger runs for only 50 kilometers per hour. But if the deer comes to know that there is a tiger behind him, instead of running with the talent and skills what God has given, the deer keeps on looking behind, keeps on looking behind, और फिर tiger उसको पकड़ के खा जाता है. So that is fear. Fear will kill your courage and make you a victim. So the deer is having very good speed of running. अगर वो अपनी स्पीड पे भाग जाता ना, तो टाइगर उसको पकड़ ही नहीं सकता था. लेकिन उसके अंदर डर था, और वो डर made him lose courage. Why? He went on looking behind. He underestimated himself. Same way with COVID's attacking power is very less than humans' immunity power. So human mind should be strong. If human mind is weak, and if your immunity is weak, then only COVID can attack you. Otherwise, COVID cannot attack you. Please remember that. So you should not get scared of COVID. You just have to improve your immunity power and take all the precautions. Otherwise, it will be like the deer and you will be attacked. Yes, we have to have values in our life. Values are very important for self-development. Now, what are values? There are so many values. It depends on what you pick up. These values are not taught, they are caught. तो वैल्यूज मतलब आपके सामने इतने सारे पत्ते हैं, आपको कौन से पत्ते सिलेक्ट करना है वो आपका चॉइस है. whether you want to select respect, whether you want to select discipline, whether you want to select courage, whether you want to select patience, whether you want to select patriotism, whether you want to select honesty, whether you want to select forgiveness, all the choice is yours. Values are not taught, but they are caught. You know what happened? Now we'll take courage. Two friends, they went for a walk, and one was fat and one was thin. The fat one fell in the well. Okay, the thin one started calling, help, help, help. यहाँ देखा वहां देखा, कोई भी नहीं था. तो वो अपने दोस्त को मरने छोड़ता था नहीं. उसने गॉड को प्रे किया, motivate himself, charge himself, and he said, yes God, I am going to do it. मेरे में ताकत है मेरे फ्रेंड को बचाने के लिए. And that bucket was there. उसने वो बकेट नीचे छोड़ा, वो फ्रेंड वो बकेट में बैठा, मोटू फ्रेंड, और उसने वो बकेट खींचा और अपने फ्रेंड को सेव किया. What helped him in saving? His own self motivation, his courage, his confidence. How did he build it? On his own. Patience. You know, there was a father, he had 3 sons. उसने उनको ना kernels of corn दिया था. One son what he did, वो तीनों लिया, मुंह में डाल दिया, खा लिया. दूसरे ने क्या किया, उसको उगाया, मक्का आया, खा लिया, खत्म. तीसरे ने क्या किया, उगाया, मक्का आया, उसने फिर से निकाला सब कॉर्न्स को, कर्नल्स को, फिर उसने फिर से डाला, फिर मक्के के भाग हो गए, फिर उस मक्का लिया, बेचा और इतना अमीर बन गया. तो तीसरे में क्या था, patience. Patience are very, very, very important. Okay, then I can give you one more example of integrity and courage. Yes, there was one king, he didn't have children, तो उसको next राजा बनाने का था. तो उसने at the age of 20 के सब बच्चों को बुलाया था, सब बच्चों को बोला तुम लोग आ जाओ, और सबको he gave one seed, और सबको बोला ये सीड ले लो और आप उगाओ. एंड
1 साल के बाद अब झाड़ लेके मेरे पास आ जाओ। तो सब लोग गए और ये लड़के का नाम राम था। तो ये लड़का, उसने भी वो पॉट में डाल दिया और वो पॉट में वो भी पानी दाना सब डालने लगा और इतने सुंदर हो गए। राम का झाड़ बड़ा हुआ ही नहीं। राम बहुत टेंशन में आ गया, बोला मम्मा मैं क्या करूंगा, अभी राजा तो मुझे चिढ़ेगा। तो उसकी मम्मी बोली नहीं बेटा आप ऐसे मत करो, यू take the plant as it is to the king, let it be, and you say I am sorry. So that is integrity and courage. So then all of them go to the king after 1 year. सबका झाड़ देके राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा बोलते वाह 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 वाह। फिर ये राम के पास आता है, बोलते आपका झाड़ नहीं होगा। बोले सॉरी सॉरी सर, सॉरी ये राजा मैं क्या करूं, मैंने बहुत दाना पानी सब कुछ डाला लेकिन मेरा झाड़ ऊपर ही नहीं आया। तो वो बोला आप मेरे राजा, ये नेक्स्ट राजा बनोगे। सब लोग देखते रहे राजा को, बोलने लगे अरे इसको आप राजा कैसे बनाओगे, ये तो उसका झाड़ ऊपर आया ही नहीं। वो बोला क्योंकि मैंने सब बी को बॉइल किया था, तो झाड़ कैसे आएगा। ये एक ही था जो वफादार था, लॉयल था, और इसीलिए उसने वैसे का वैसे ही झाड़ लेके आया। आप लोग ने बाहर से बी डाल के झाड़ उगा के मेरे पास आ गए। सो दिस इज व्हाट, इंटीग्रिटी एंड करेज। Okay, important things in life. Try to find out the good in people and forget the bad. Make friends, not enemies. Don't talk about money to other people. हाँ, अगर आप आपका पैसा बांट रहे लोगों के को, तो आप पैसे के बारे में पैसे का अकड़ दिखाओ, नहीं तो आप पैसे का अकड़ मत दिखाओ। डू नॉट ट्राई टू लिव अप नेबर्स। वो लोग नाच रहे करके आप नाचोगे नहीं, आपकी चादर देख के नाचो। वो लोग नाच रहे करके आप कभी मत ना। बी श्योर दैट यू पे बैक टू। अगर आपने कभी लोगों से पैसा लिया तो उनको वापस देना भी जरूरी है। वैल्यू योर फ्रेंड्स, लव योर चिल्ड्रन, enjoy your life because God has given this life. This is God's creation. You can't destroy it. We have no right to destroy it. Yes, another important soft skill is listening. You have to be a good listener. If you listen properly, then only you can understand the message properly, and that will help you in effective communication, and then you will be able to answer properly. Lekin if somebody is talking and you're looking there in the class, then if the teacher asks you a question, you'll be puzzled, you'll be blank, you won't know what to do. Yes, we have got 5 senses we should use: our eyes, our nose, our mouth, our ears, our thinking sense. All these senses we have to use. And when somebody is talking, look into the eyes. I told you this V shape is important. Yes, keep on nodding your head. Sometimes you can say yes, yes, yes. You have to keep on, and all these taught you is practice, 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 because only practice will make you perfect. You have to look in the mirror, find out, and practice, practice, practice. Yes. What are the 5 keys to active listening? What are the 5 keys? One is you pay attention and keep eye contact. Then you show that you're listening. सामने वाले को बुरा लगेगा अगर वो बात कर रहे हैं और आप सुन नहीं रहे, तो सामने वाले को बहुत बुरा लगेगा। Provide a feedback. Feedback कैसे दोगे आप? आपके body language से. Yes, by nodding your head. Defer judgment. कभी भी ऐसे बिना वजह से ऐसे जजमेंट पास मत करना। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, सोच के जवाब देना। पे अटेंशन to the non-verbal communication. What is non-verbal communication? Non-verbal communication is your body language, your expression. That is called non-verbal communication. Yes, always think positive. See, there was a Guruji. ये गुरुजी के पास 2 डिसाइपल्स थे, ओके, और एक डिसाइपल को वो बहुत ज्यादा काम देता था ये वो, तो दूसरे डिसाइपल में ना एक कॉम्प्लेक्स आ गया, उसका सेल्फ एस्टीम लो हो गया। तो वो क्या हो गया, वो गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी को कहा कि आप उसको ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए आप उसको ही सब ये बोलते हैं, ऐसे करो वो। तो गुरुजी ने बोला नहीं, मेरे लिए तो आप गांव में जाओ और गांव से एक बुरा आदमी लेके आओ, एक ही बुरा आदमी, बस एक। गया गया गया, सुबह गया, अकेला आया।
गुरुजी ने कहा क्या हुआ, आप अकेले आए? तो बोले नहीं, गांव में तो सब लोग बुरे हैं, तो मैं किसको लेके आता, इसलिए मैं अकेला आ गया। तो वो गुरुजी ने वो दूसरे आदमी को बुलाया, बोला अभी आप गांव में जाओ और एक अच्छा आदमी लेके आओ, एक अच्छा आदमी, बस एक। तो वो आदमी गया, अच्छा आदमी लेके आओ, एक अच्छा आदमी, बस एक। तो वो आदमी गया, वो सुबह में गया, वो शाम को आया, वो भी खाली आता है। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, आप खाली आता है? बोला सब लोग अच्छे थे, मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं दिखा, इसलिए मैं अकेला है। तो गुरुजी ने ये आदमी को बोला यही फर्क है आप में और उसमें, इसलिए आपका वो जो सोच है ना, अच्छा सोचो तो आप अच्छा देखोगे, आपकी सोच को पॉजिटिव करो, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव एंड पेसिमिस्टिक पीपल। यस, then we did self-esteem, we did self-confidence, we did self-motivation, we did self-courage. Now what is self-control? Self-control is your behavior, how you behave, आपके गुस्से पे काबू रखना। yes, एक पिंजरे में एक मंकी था और बाहर से शेर गुर्र 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 कर रहा है, ये मंकी तो ऐसे बैठ के उसको देख रहा है। यस, क्यों क्यों गुस्सा करने का, मंकी को तो पता है कि मैं तो पिंजरे में हूँ, शेर मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है, तो भी दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। नहीं तो मंकी भी ऐसे कुछ कर सकता था उसको, लेकिन मंकी ने कुछ भी नहीं किया, वो तो आराम से ना एकदम कूल बैठा था, उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। सी रिमेंबर, अ स्मॉल मस्टर्ड, राई का दाना, उसको भी पोटेंशियल है टू ग्रो। तो कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, तो कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, चाहे वो गरीब हो या उसका वो उसके पास पैसे नहीं है या वो पुअर है स्टडीज में। वक्त कब बदलेगा यू कैन नेवर नो, यही छोटा इंसान कब बड़ा आदमी बनेगा यू डोंट नो, सो नेवर अंडर एस्टिमेट। यू नो, अ स्मॉल गर्ल नेम नजत Walid Belkacem, she used to herd sheep in Morocco. She's become the finance minister of education at the age of 20, a shepherd girl. Okay, ये लड़की वो सब शेपर्ड्स को लेके ना, गाय बकरी, गाय भेड़िया बोलते ना उसको, शीप को, वो लेके गांव में जाती थी। ये लड़की फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बन गई एट द एज ऑफ 20 मोनाको। जस्ट इमेजिन, उसका डैडी बहुत स्ट्रिक्ट था, वेरी 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 स्ट्रिक्ट, लेकिन ये लड़की के अंदर जो था, शी हैड सेल्फ कंट्रोल, शी हैड सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ एस्टीम, एवरीथिंग इन दैट, शी ऑल टुगेदर हेल्प टू मेक अ ड्रीम कम true. So you can also make your dream come true. Now when I talk about self control, I mean control over your emotions. देखो, दुख तो सबको है, सुख दुख, लेकिन अपना दुख का डंडोरा पीटना बाहर जाके, दैट इज वेरी बैड। आपके हमेशा फेस में एक ड्रेस पहनो स्माइल का, कॉन्फिडेंस का। आपका प्रॉब्लम आपके साथ, आपके पास, और गॉड को बोलो, और किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका लाइफ अगर चेंज कर सकता है तो एक ही इंसान कर सकता है, वो आप और सेकंड गॉड। तो दोनों को मिलके यू नीड टू वर्क टू चेंज योर लाइफ। यस, यू हैव टू हैव सेल्फ कंट्रोल। अगर आप किसी के घर में गए और आपको आइसक्रीम दिया, बर्फी दिया, अब ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, आपको घर में जाके क्या होने वाला आपको ही मालूम है। यस, आप सेल्फ कंट्रोल का मीनिंग है कि आपने पॉपकॉर्न खरीदा है और आप मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन आप मूवी शुरू हो आप पॉपकॉर्न को हाथ ही नहीं लगाते हो। आप सोचते नहीं, जब मूवी चालू होएगा तो मैं पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देखेगी। दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सी, वन थिंग व्हाट यू कैन डू इज, in any circumstances, always keep a smile on your face। और तूफान हो या आंधी हो, जब आप घर के बाहर जाते हो ना, अच्छा सा ड्रेसअप पहनना। यू शुड ऑलवेज ड्रेस अप स्मार्टली। Cover your problems by smile, good dress, and a positive attitude. Nobody will come to know. You just walk. If you cannot, you just pretend to smile. करो, फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। आपका किसी को पता नहीं चलेगा आप दुख में हो, सुख में हो। Nobody will come to know. So you have to do it yourself. Practice, practice, practice. कोई भी गलत विचार आपके दिमाग में आएगा ना, तो बोलने का 3 बार, cancel, cancel, cancel. God, please cancel all these bad thoughts in my head and help me to think positive.
and this you have to do it yourself. Nobody can make you positive, nobody can build your confidence, nobody can motivate you, nobody can build in the courage. All you have to do it on your own. Believe in yourself and you can do it. Yes, you have to do it. Change your attitude, become a पॉजिटिव पर्सन. सोच बदलो, नजरें बदल जाएगी. नजरें बदल जाएगी तो दुनिया आपको अच्छी लगेगी. यस, फिर आपको कोई बुरा दिखेगा ही नहीं. टेक कंट्रोल ऑफ योर बिहेवियर. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. लिसन टू योर ओन लैंग्वेज. when you talk ना, you listen to your own language. आपको पता चलेगा कि आपका लैंग्वेज अच्छा है कि नहीं. एनालाइज योर फ्रेंड्स. देखो आपके दोस्त जो आपने बनाया है वो सही दोस्त है कि गलत है. ये दोस्तों के साथ मैं कामयाबी का सीढ़ी चढ़ सकता हूँ कि नहीं. अगर ये गलत दोस्त है तो उनको फेंकना, छोड़ना बहुत जरूरी है. अगर आपको लैडर ऑफ प्रॉस्पेरिटी का चढ़ना है, अगर आपको अचीवर बनना है, तो आपको बुरे दोस्त को छोड़ना पड़ेगा. जस्ट एक्सक्यूज मी. Yes, always remember, growth comes. You will grow, but not without hard work. You have to do hard work and smart work. Both are very 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 important. Hard work, smart work, and you have to struggle. जिराफ, एक जिराफ अपने बच्चे को पैदा करता है, फटाक से उसको फेंक देता है. ओके, जब डिलीवरी करता है और एक लात मारता है, वो बच्चा इतना दूर गिर जाता है. फिर वो भागते भागते जाती बच्चे के पास. बच्चा ऐसे ऐसे करता है. फिर वो वापस बच्चे के पास जाती, वापस उसको लात मारती है. फिर वो बच्चा वापस आगे गिर जाता है. फिर बच्चे देखता है, मेरी माँ मुझे लात मारते जाती है, अभी वो भाग के आ रही है, नहीं उठा तो मेरी माँ मुझे वापस लात मारेगी, भागो. तो वो खुद हिम्मत करता है, खुद अपने आप वो ताकत जमा करता है और उठता है और भाग जाता है. तब जाके माँ उसको पकड़ के गले लगाती है और बोलती है, बेटा मैंने आपको लात इसलिए नहीं मारा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ. मैंने आपको इसलिए लात मारा क्योंकि मैं चाहती थी आप जल्दी से जल्दी अपने पैर पे खड़े रह जाओ और आप भागने लगो, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है. अगर आप नहीं भागे, नहीं अपने पैर पे खड़े रहे, ये दुनिया आपको नोच नोच के खा डालेगी. So that is the reason. So when your mother scolds you or your mother says something bad to you, please don't feel bad. There is a lot of love in that. Then ईगल का लाइफ क्या है? 40 years. अगर ईगल को 70-80 साल जीना है तो ईगल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और ईगल को पता है. और ईगल नहीं मरना चाहता है 40 की उम्र में. तो ईगल क्या करता है? अपना खाना यहाँ वहां सब इकट्ठा करता है और एक बड़ा एक क्लिफ के ऊपर जाके बैठ जाता है और वहां पे अपना वो बुढ़ा चोच जो है ना, उसको ऐसे मार मार के तोड़ देता है. अपने पंख निकालता है, पहले पंख निकालता है, फिर चोच तोड़ता है. फिर बाद में इतना दर्द होता है उसको. लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है, वो अपना खाना वाना सब लेके रखता है. थोड़े दिन के बाद नया पंख आता है, नया चोच आता है और ईगल का जो लाइफ 40 इयर्स वो 70-80 इयर्स तक हो जाता है. ऐसे ही कैटरपिलर, ये कैटरपिलर है ना, ककून के अंदर रहता है. बहुत स्ट्रगल करके वो बाहर आके ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है. लेकिन एक दिन क्या हो गया, एक टीचर ने ना सिखाने के लिए एक ककून को लेके क्लास में गई और बोले, बच्चों अभी तुम इनको देखना कैसे ये कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है और मैं 1 मिनट में आ जाती. तो सब लोग देख रहे थे. एक छोटा बच्चा, उसने देखा बहुत मेहनत ले रहा है कैटरपिलर, उसको बहुत दया आई, उसने जाके ककून तोड़ दिया. वहीं पे ये कैटरपिलर मर गया. फिर टीचर आई, बोली ये किसने किया? तो बोले, सॉरी मिस मैंने किया, लेकिन मैंने बुराई से नहीं किया, मैं तो कैटरपिलर को मदद करने गया था. बोला, बच्चा कैटरपिलर जब तक स्ट्रगल नहीं करेगा वो एक बटरफ्लाई नहीं बन सकता है. द वर्ल्ड इज चेंजिंग रैपिडली. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड वी हैव टू स्ट्रगल. मेहनत लेने से पीछे मत हटो. यू हैव टू टेक पार्ट इन ऑल कॉम्पिटिशंस. यू हैव टू कम ऑन द स्टेज. जीतना इज नॉट इम्पोर्टेंट. पहले बार आप जाओगे एलोक्यूशन में, आप नहीं जीतोगे. सेकेंड टाइम आप जाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. थर्ड टाइम आप जाओगे तो फटफट बोलेंगे. फोर्थ टाइम आप जरूर जीत के आओगे. फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, थर्ड, लेकिन आप तो जीत के
So you have to gain your confidence, you have to motivate yourself, you have to become a positive person, and all this you have to do it on your own. Don't run away from your responsibility. Be a part of solution, not a problem. आपका जिम्मेदारी लेना सीखो, दूसरे पे मत डालो. जैसे कि वो बॉस, वो 2 बार सक्सेस नहीं हुआ. पहले बार उसने पहला चिट्ठी खोला, उसमें क्या लिखा था कि आपके ऊपर ब्लेम मत ले लो दूसरे, और उसने पहले वाले बॉस के ऊपर ब्लेम किया. दूसरी बार चिट्ठी खोला जब वो डूब रहा था, तो वहां पे लिखा था ऐसे ही एनवेलप खोलो और दूसरे को देना. मतलब इफ यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, देन यू ऑलवेज ब्लेम. यस, a positive mental attitude is much better than a better aptitude. Practice having a positive attitude. Always talk positive. And any bad thought come, again I'm telling you, please say cancel, 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 and cancel the negative thought, and tell God, please send positive thought. And always remember the